I'm Primrose, the managing editor. We have Chandni, Femina brand manager, and Devika from the Femina brand team. And of course, Sana and others from the events team, who you guys are familiar with. As always, I would like to thank our presenting sponsor, Bosch Home Appliances, our hair and makeup partner, Naturals, and our Silk Assurance partner, Silkmark. You know the drill now. We are recording. Keep yourselves on mute so that we get the best possible recording. Today, we are here for a session with Ashna Dhanuka, life and confidence coach and motivational speaker. Some of you all will wonder why we are bringing you this session after your challenge rounds. It is because this is not the end. This is the beginning of a life touched by your experience with Femina. We know you have discovered within yourselves new skills, new strengths, new resilience in response to each of the challenges we have thrown at you. And we believe that you are all truly unstoppable. Like Ashna, strengthened by her own journey and the struggles she has faced, Ashna believes that success comes with self-love and belief in yourself. The only way to move forward is with confidence, self-esteem, and hard work. She will be sharing with you secrets that will change the way you think, behave, and live for the better. Welcome, Ashna. Thank you so much. So, Ashna, waiting to hear what you're going to be telling us. Can I take over? Yes, absolutely. 5, 10, 15 years ago, I did not know I would be such a confident woman. Believe me, honestly, I had no clue because I was a shy individual and running behind my mama's palu. I did not know I'll become a confidence coach. I did that. I made it. You know how? Here am I to share the secret formula with all of you. What a mesmerizing room this is. Ladies and gentlemen, a huge hello from my side. This is life coach Ashna to tell you all the secret formula. The first secret formula today is trust yourself more than you doubt yourself. Did you hear me right? Trust yourself more than you doubt yourself, and trust me, the universe will be open to you. First thing first, congratulations on winning the crown. Oops, you must be wondering, कौन सी crown की बात कर रही हूँ मैं, right? Are you all wondering? Just give me a thumbs up or a thumbs down. Are you all wondering? Yes. आपने तो crown अभी घोषित ही नहीं की, फेमिना वाले ने तो crown घोषित ही नहीं की, तो मैं कौन सी crown की बात कर रही हूँ? You know what? जब से हम पैदा होते हैं ना, एक invisible crown लेके हम पैदा होते हैं. Are you all okay with Hindi and English both? Yes? हम इनविजिबल क्राउन लेके पैदा होते हैं. वो क्राउन कभी कभी क्रूकेट हो जाती है बिकॉज हम सेल्फ डाउट, लिमिटिंग बिलीव्स, फियर, ये सब चीज में घिरे रहते हैं. हमारी क्राउन क्रूकेट रहती है और हमें पता ही नहीं रहता है कि क्राउन है हमारे सर पर. बट यू गाइज आर ऑलरेडी अ विनर्स. आई विल टेल यू हाउ. आपने अपना सुपर पावर रिकॉग्नाइज किया, अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया, एंड यू आर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म. बिलीव मी, हमारे जैसे हजारों औरतें हैं जो मिसेस फेमिना की ओर बढ़ना चाहते हैं बट वो पहुंच ही नहीं पाते. ऐसा नहीं है कि फेमिना वाले अलाउ नहीं करते हैं उनको पार्टिसिपेट करना, वो पहुंच इसलिए नहीं पाते हैं बिकॉज फियर, सेल्फ डाउट, लिमिटिंग बिलीफ से घिरे रहते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग. सो लेडीज, straighten your crown. I want you to do like this and straighten your crown. You guys are bold. You know what is bold? हम सब बोलते हैं हम bold है, but exactly bold क्या होता है आपको पता है? Beyond ordinary life doings. BOLD. Remember that. You all are doing beyond ordinary lives doing. So big round of applause to each one of us here in the room. We all worry a lot. Okay, can Yamini tell me what exactly worry is? It's something which we overthink in our mind. Okay, so can Shilpi tell me what worry exactly is for you? I feel it's all about how I react to a situation in a more difficult way. Anyone else who want to tell me worry actually hai kya? Yes, I think Ishani. worry. Yeah, Rashi. Yeah. Should I speak? Yeah. Yeah, Rashi, go. Rashi. Yeah.
I think worry is something, is a fear of being judged. Because if we have to judge our own self, then we are not fearful. But when it is to be judged by others, then we are worryful that that decision is just not in our hands. So for me, it is from outside, because of outside. Okay, so Ishani wants to tell what worry is, then we'll move to Surbi. For me, yeah. So for me, worry is basically not being able to control the things. So that's the major cause of worry for us. So yeah. Okay, so we move to Surbi, and then I'll tell you what exactly worry is. See, according to me, worrying is... Can you hear me? Yeah, Yes. I can. Yeah. Yeah. So according to me, worrying is fearing what happened and fearing what will happen. When you're not in the moment, you're never happy. I mean, you're just worried. You have to understand that this is it. And there are a lot of things we can't control. So we have to live in the moment and enjoy it. Okay. And Prerna wants to tell what worry exactly is. I think Surbhi actually quoted it, that not living in the moment and thinking too much about the future is what worry is all about. If you enjoy where you are right now, I think there will be less of worry and more of enjoyment. Okay. I loved your answers. Of course, this is worry. But what exactly worries, I'll tell you. We are worrying about the past. We are worrying about the future. जो हो गया वो हो गया, हम चेंज नहीं कर सकते. We keep on worrying about that. और फ्यूचर में जो हुआ नहीं है उसके बारे में इतना वरी करते हैं, हम प्रेजेंट में जीना छोड़ देते हैं. भगवद गीता, आई रीड अ लॉट ऑफ भगवद गीता, उसमें कहा जाता है ह्यूमन माइंड इज सच, इट्स नॉट अबाउट ओनली यू और मी, द ह्यूमन माइंड इन द यूनिवर्स इज सच. हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में इतना वरी करते हैं कि हम गिफ्ट जो है प्रेजेंट उसको हम भूल जाते हैं. जो भी हमारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे, हमारे जो भी लाइफ में हार्डशिप आएगी, हार्ड डेज आएंगे, वो हमें ही फेस करना है. अगर मेरे पास कोई ऑब्स्टैकल आ गया तो मेरी जगह आप नहीं आ सकते उसको फेस करने के लिए, मैं ही करूंगी. सो WORRY, wrong or right, remain yourself. You get this? Wrong or right, you have to remain yourself. So why to worry? We have to be in the present no matter what. भगवद गीता की ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, enjoy the moment. Present में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, पास्ट से एक लेसन ले सकते हैं, फ्यूचर में हम कुछ लेसन दे सकते हैं. तो जो भी बदलना है, we have to do it in the present. So this is worry. Wrong or right, remain yourself. That is worry, and you will drop down all your worries if you exactly follow all my practical formulas I'll tell you. What happens is every one of us, हम fear से बहुत डरते हैं, हम fear को face ही नहीं करना चाहते हैं. We keep sweeping the fear under the carpet. ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं हम? 80% टाइम हम ऐसा करते हैं ना, हम अपने fear को carpet में sweep करते जाते हैं. What happens is that carpet is no longer a carpet, it becomes a mountain one day. और हमें उस mountain को face करना ही पड़ेगा. आप घर पे ही ले लो, अगर हमारे इस्त्री के कपड़े जमे हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम? कहीं ना कहीं उस स्टैक को हमें आयरन करना ही पड़ता है. आप यूटेंसिल्स ले लो, हम यूटेंसिल्स वॉश नहीं करेंगे, स्टैकअप करते जाएंगे तो एक ना एक टाइम पर, रात में हो या दिन में, वी हैव टू वॉश दैट यूटेंसिल्स. नो, सेम विद द फियर. If we keep on sweeping the fear under the carpet, it will become a mountain. So one best thing to face the fear is be friends with your fear. Fear को अपना best friend आप बना लो. Ask the fear what exactly you want, why you want, what exactly you want from me कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो. Trust me, ये सुनने में लग रही है कि क्या बकवास हो रहा है. But once you make fear your best friend, I will tell you, you'll coach yourself. You don't need me later on कि बताओ क्या है. So I'll tell you this coach method to treat this fear. COACH. If you have a pen or a pen or diary, you can just jot it down the point so that आपको बाद में याद रहेगी कि मैंने क्या बोला. COACH. C stands for come close to your fear. Like I said, be friends with your fear. Please come close to your fear. O is organize your fear. आप fear के close आ गए, आपको पता लगेगा वो है क्या, क्यों है, कैसे है, कौन सी fear है. ये fear of judgment है या fear of criticism है या कुछ fear of height है या क्या fear है, आपको exactly पता लगेगा. Organize your fear.
Once you start organizing your fear, you'll come to know what exactly is happening. Organize कि मुझे ऐसा fear है, मुझे ऐसा करना है, मैं ये करूंगी तो मैं इस तरह से आगे बढ़ पाऊंगी. So that's organizing. Organize your fear. A is take action. Once you've organized your fear, you will start taking actions. You'll start taking actions towards your fear. कि मुझे पता है fear क्या है, मैंने organize किया है क्या करना है. Now I'm going to take action. Then C is coach yourself once in a while. Journal journal your feelings once in a while. कि मैं fear है, मैंने किया, मैंने action लिया, फिर भी मैं overcome नहीं कर पा रही हूँ. Where am I lacking? Just jot down, journal, coach yourself, become your own coach. Everybody is a coach for themselves. हम बच्चों के लिए कोच होते हैं, हस्बैंड के लिए हम एक्ट करते हैं कि हम कोच हैं, बट हम खुद के लिए क्या कोच होते हैं? We don't. Become your own coach. And then comes H, you'll heal yourself. When you organize, when you know, when you take action, you'll heal yourself. And आपको पता लगेगा ये fear एक चुटकी वाली चीज थी, कुछ थी नहीं. So this is the way you have to tackle your fear. Coach your fear, coach yourself, and then you'll know. Does that make sense? Yes or no? Okay. So don't be scared of failure. Failure and success. आज अगर आप crown हासिल नहीं कर पाए, crown तो एक ही है ना, हमारे invisible crown में एक addition हमें मिलेगी, किसी एक को मिलेगी. So does that mean बाकी सब failures है? No, you are here already. हार जीत तो एक game है, it's okay, but आप already यहाँ पहुंच गए हो, you are already a winner. करोड़ों औरतें हैं, करोड़ों फीमेल है, उनमें से आप 20 यहाँ पे पहुंचे हो. So you already are a winner. Failure is not end of anything. What is end? Effort never dies. End तो खुद ही बोल रहा है ना, effort never dies. So why do we say कि end हो गई यार, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे? End itself has a positive perspective. End itself is telling effort never dies. So we come to the second formula. First formula मैंने बोला trust yourself more than you doubt yourself. उसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताया. I hope आप एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालोगे. ऐसा आप करोगे तो you won't be able to move forward. Confident होने के लिए ये छोटे छोटे practical formulas को आपको अपनाना ही पड़ेगा. And practice makes a man perfect. जैसे आप ramp walk करते हो ना, practice कर करके ही perfect होते हो. Exactly with all this formula. Practice will make you perfect. Let's move on to the second formula, that is the PR formula. हमने सुना है कि public relations किसी के strong होने से वो अपने आप ही confident human being हो जाता है. Right? 50% time public relations से हम confident feel करते हैं. But public relation तक पहुंचने के लिए भी एक process है. ऐसे ही हमारी PR strong नहीं हो जाती. So PR is one formula. Let's bid it. Bid is break it down. So I'm not bidding, I'm not gambling. Bid is break it down. Let's bid PR. P into planning, preparing, and presenting, and R is resting. Okay? Are you all getting what I'm telling? I'll keep asking you all so that, कोई phone पर scroll ना करो और कोई video off करके कुछ ना करो. This happens at times. So PR, planning, preparing, and presenting. So can anyone unmute and tell what is planning, preparing, and presenting? Any one of you? Sonal, can you? I guess planning, prepping, presenting is all about how you want to present yourself, the kind of image you want to portray to people, and what you actually put across. Say, for example, nowadays social media has become like out there, you can present yourself the way you want. So I'm assuming it is about the kind of image or the kind of way you want people to perceive you. That is what it is. Okay. I like your answer. Anyone else who wants to? Yeah, Tapeshwari, yes. For me, I think planning is setting goals for yourself. What is it that you want to do? And then working on it, which is the preparation part of it. And then how do you want the world to see you? So working on that kind of presentation is, I think, what this means. Yeah, you're very close to what I'm trying to explain. Anyone else? Yeah, Yamini. For me, planning is knowing what resources you have and how you can make the best out of it. Okay. For Anyone me, I else? think, yeah. Yeah, Rashi.
Planning is basically all backstage. That's before the performance you do in your mind, and you just check out on everything and see the different perspective you want to achieve. Then you prepare, you carry all the resources, take out and go out and reach out to more things and which are possible. And then comes the execution part, that now you have done the planning, preparing, and now you have to perform on the stage, and how it will be presented like a dish to your guests. So yeah, for me it's that. Okay, you all are already close to what I'm going to explain. Yeah, Prachi and Shilpi. First, Prachi, let's hear from you. Okay. So planning and preparing, I think so. It means that getting ready and accepting that what you have to do and getting ready for it. Okay, Shilpi. So planning is having the vision of what you want to do at the end result, thinking about it, and then planning what is required and plan accordingly. And then is preparing. So preparing is about doing your homework, how exactly you're going to execute it. So preparing about that, and then presenting is how you're going to present it. Okay, and the world. You wanted to say something. Yeah, Surbi. Yeah, so like Oscar Wilde said, that even to be natural, you need to pretend. So everything requires planning. So even if you're trying to be lazy, that also requires planning. Okay. So life is all about planning. And then if you plan properly, you can definitely present. And so, if I call myself a creature of the moment, even that is my planning for myself, that I don't want to plan. So everything is a plan. So you are already close to what I'm going to explain. So I bid P into planning, preparing, and presenting. So let it very easy for you all. आप बाद में जाके ये सब चीजों को फॉलो कर सकोगे. बहुत easy तरीका है. प्लान, प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ता है. Am I right? We have to start. START is the spelling of start. Let's break this down again. S stand for strategize. First, अगर आप कोई ड्रीम देखते हो तो आपके दिमाग से स्टार्ट होती है. And you need a roadmap for your, life. Imagine I'm telling a travel agent, send me anywhere. मुझे क्या भेज देंगे? मुझे क्लियर पिक्चर चाहिए, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कितने लोग जा रहे हैं. Exactly हमारी लाइफ के साथ भी ऐसी है. We need a map for our life. जहाँ पे हम पूरी, अपने आधे से ज्यादा टाइम जहां बिता रहे हैं उसके ही हमारे पास मैप नहीं है, तो हम लाइफ में क्या करेंगे. तो S stand for strategize. Strategize whatever you want and do not keep it in your head. सर पे रखने से खिचड़ी बन जाएगी. Jot it down, whatever comes to your mind. You want to strategize a particular event, a particular goal. कुछ भी गोल होते हैं, हमारे अलग अलग गोल होते हैं. If we have 20 goals, तो 20 goals big or small, smart goals होते हैं, छोटे बड़े मिला के होते हैं. So हर गोल के लिए प्लानिंग चाहिए. एक पेन भी खरीदना है तो we have to strategize. कौन सा पेन खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, क्या बजट है हमारा, सब हम strategize करते हैं. तो S stand for strategize. T stands for task oriented. Break down your task. Strategize तो आपने कर ली, जो भी आपने strategize किया सब एक साथ अगर करने जाओगे, multitask करोगे, if you start doing everything, you'll end up doing nothing. Break down your task. अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ. जैसे आपने मिसेस फेमिना के लिए आपने एनरोल किया. You had that strategy, ना, मैं enroll कर सकती हूँ. I am capable. I have that strength to do that. It's okay. You don't have to be the prettiest, smartest, tallest, or the thinnest to become Mrs. Femina. You just need that confidence inside out. आपको बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है, या आपको बहुत जीरो फिगर होने की जरूरत नहीं है. You just have to be confident inside out. तो आपने strategize की. Yes, I have the ability. मैं ऐसा करूँगी, ये करूँगी, ये पहनूंगी, ऐसे मैं enroll करूँगी, मैं इसकी help लूँगी. This is my PR team, वगैरह वगैरह वगैरह. आपने स्ट्रैटेजाइज की. इतने सारे चीजें आपने अपने दिमाग में रख लिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ब्रेक योर टास्क. कि ठीक है, मैं अभी इनरोल करूंगी, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, अगर मैं फाइनल में आऊंगी तो ये होगा. छोटे छोटे टास्क आपके होते हैं जो आप स्प्लिट करते हो. वी वर्क ऑन वन टास्क एट अ टाइम, ताकि वो पूरी होती जाए. सब कुछ करने लगोगे तो ट्रस्ट में आपको 10% भी आउटकम नहीं मिलेगा. So don't multitask, okay? Give one task your 100% so that 70% outcome तो आपको मिल ही जाएगी.
Then what happens is, आपने strategize की, task को आपने break की, now you have the ability, you know you have the ability, इसीलिए तो आप आगे बढ़ रहे हो. Polish your ability. हमारे पास बहुत सारी एबिलिटी कैपेबिलिटीज होती है, बट क्या होता है, हमें पॉलिश की बहुत जरूरत होती है. हम सोचते हैं वी आर द बेस्ट, ऐसा नहीं होता. वी नेवर थिंक टू बिकम द बेस्ट. Just focus on becoming the better individual than yesterday. Best कोई नहीं होगा. Nobody will be the best. Learning is a lifelong process. मरते दम तक भी कुछ ना कुछ सीखना बाकी रहेगा. So you cannot be the best. और हर लोग हर चीज में सुपीरियर होते हैं. जैसे मे बी मैं कॉन्फिडेंस कैसे आए उसमें सुपीरियर हूं, तो आप ब्यूटी में सुपीरियर है, दूसरा बंदा फैशन में सुपीरियर है. सो हर कोई हर फील्ड में सुपीरियर होता है. एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच वन ऑफ दैट. वी कैन नॉट बी द बेस्ट. आई से पर्सनली वी कैन नॉट बी द बेस्ट. So learn to become the better individual than yesterday by polishing all your abilities. जितनी ability है उसको polish कर दो. Trust me, once you master that ability, you'll become the best in that. So STA, then R, research. आपने strategize किया, task को break किया, ability को polish किया. अब आप research करिए कि कहाँ क्या हो रहा है. Suppose आप Mrs Femina में आए, तो research आपके दूसरे contestant कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे कौन सा फोटोग्राफर के पास जाना चाहिए, कौन सा डिजाइनर के पास जाना चाहिए, कौन सी शूट करनी चाहिए, कौन से बॉडी लैंग्वेज क्लास में जाना चाहिए. यू हैव टू रिसर्च एवरीथिंग. रिसर्च करे बिना आप घर बैठे बोलोगे मैंने स्ट्रैटेजाइज किया, टास्क को मैंने स्प्लिट कर दिया, अब मुझे कुछ आउटकम नहीं मिल रहा है. इट विल नॉट हैपन. यू हैव टू रिसर्च. एंड देन कम्स फाइनल व्हेन यू गिव योर टाइम. आपने STAR किया है परफेक्टली, तभी आप मुझे आज टाइम दे रहे हो. यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ सो वेल टुडे because you've worked on the STAR, and then the T, you are giving the time. So this is START, जहां पे आपकी planning हो रही है, preparing हो रही है, and T में क्या हो रहा है, आप time दे रहे हो, you're presenting yourself. So this is START. Now comes R. R क्या है? Resting. सब कुछ हो गया. आज आपने किसी एक ने फिनाले जीत ली, किसी ने नहीं जीती, कुछ भी हो सकता है. You have to take a break, rest, सेल्फ ऑडिट करिए कि अगर आपने जीती तो आपके अंदर क्या एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसके कारण आप ये क्राउन हासिल आपने कर लिया. और आगे बढ़ने के लिए, और क्राउन इज नॉट एवरीथिंग, आगे आपको मूव करते जाना है. सो आगे बढ़ने के लिए वो कौन सा एक आपका कैपेबिलिटी है जिसको आपको और पॉलिश का दरकार है, सो दैट यू बिकम मिसेस वर्ल्ड. और अगर आपने क्राउन नहीं हासिल की तो यू आर अ विनर, आप 20 तक पहुंचे हो, कहां पे आप लैक हो रहे हो कि आप नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, where do you want to improve, what do you want to do, all that will be done only while you rest. काम करते वक्त अगर आपका दिमाग, is my internet stable, are you able to hear me? We can hear you, able to hear? Buffering a bit. We can hear you, but buffering a bit. Okay, yeah. I think some. And if you could repeat okay, the last part again, Ashna, because I think your video was stuck. Okay, the last part, you mean T? No. Just right now, the last line that you said, no? R. You started with resting, no? So resting, R for resting. You can start from there. So you have to take a rest, take a break, and then understand. You have to self-audit yourself. Self-audit every now and then is very, very important. आप किसी भी मुकाम पर हो, चाहे आप वो प्राइम मिनिस्टर हो, या आप कोई स्टेट में कोई छोटे लेवल के हो, या आप घर पे खाना ही बना रहे हो, सेल्फ ऑडिट सबको बहुत जरूरी है. यू हैव टू ऑडिट, यू हैव टू सी वेयर आर यू लैकिंग, कहाँ इंप्रूव करना है, कौन सी आपकी एक हैबिट या कौन सी एबिलिटी है जो बहुत सुपर्ब है और आप पॉलिश कर सकोगे. सो दिस इज आवर रेस्टिंग. So PR will become very strong. You'll have a great public relation out there if you start with planning, preparing, presenting, and resting. Does that make sense? Okay. Now, I think आपके दिमाग में ये होगा, planning, prepare तो सब कुछ कर लिया, but what if spontaneous अगर हमें कुछ बोलना हो या spontaneous किसी ने question throw किया हो, तब क्या होगा, right? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं. आई गिव ईच कंटेस्टेंट जस्ट 10 seconds. आप मेरे को अपने बारे में कुछ मोटिवेशन बताइए. Add some motivation words in your sentence. For example, I'll say, one productive task a day makes me really happy.
So that one, productive, is a motivation, and happy is the second motivation I used for myself. So come on, let's start with the Pragati. I just give you 10 seconds up, Lily. Just short as a sentence or, something about yourself which is motivating. Talking to myself gives me the happiness and motivate me every day. Like I spend a lot of time talking to myself and analyzing me. Okay, Ipisha. Ipisha, I think, yeah. Ipshita, yes. Ipshita. So, yeah, so the one thing about me is I don't give up easily. So I think it's very motivation for me. So if something is not happening, so I'll just work on it again and again to make it, to be perfect at it. So I do it every day. So that is effort never dies. Yes, that's so motivating. Yamini. Actually, the word you already said, that giving my best to my efforts gives me the happiness. Knowing that end of the day, I have given my best efforts, that makes me very happy at the night and I sleep peacefully. Right. Ishani, can you hear me? Ishani. So, Ashna, content creation and learning a new technology is something that makes me really, really happy. And there is just one thing that I truly believe in, which is nobody can feel inferior without your own consent. You are absolutely correct. Rashi. Starting my day early and having a lot of gratitude for this life and people around me makes me start my day very, very lovingly. So yes, that's how I already start my day. So yes, a lot of gratitude and love. Wonderful. Prachi. So taking care of myself by doing exercise daily, mostly, and taking care of others in family makes me really very happy and gives me a joy of gives me a joy. Wonderful. Tisha. That Trisha? Yeah, Trisha. Yeah, me. Perfect. Okay. Hi, Ashna. So I think self-analyzing and pushing my limits every time really motivates me. Also doing things, like you said, to the best of my ability. I think that makes me very happy. Lovely. Sonal. Okay, one thing that makes me really happy is not getting affected by any negative comments or the negative people around me. That's one thing I've been able to overcome, and I'm really happy about that. So that keeps me going on a daily basis. That's so wonderful. You know what? I just wanted to tell something. Negativity is just like tax. The more money you make, the more tax you have to pay. The more, mature you are, the more wonderful you're doing towards a goal, you'll get haters also. And haters are your biggest fan. I'll tell you that. Munmun. Hi, Ashna. I think I'm a very positive person. I think positivity, same like Sonal said. And whatever happens, I strongly believe that that happens for good. And you don't realize at that point of time, but you realize it later on in your life that that has happened for something good that you realize. And I also believe that it's never too late to learn things. Everyone can teach something. And that fire inside me to acquiring knowledge, I think that sets me like different from others. And I believe in this. Lovely. Surbi. Yeah, Surbi. I believe this is my own quote that for some success is happiness, but for me happiness is success, and I have a great sense of gratitude towards God. He's been kind because I've survived a rare disease, which was like I've got a second life, and I'm living it to the fullest. So I think that I'm living in the moment that makes me really happy. Wonderful. Have I missed anyone? Yeah, Shilpi Tapeshwari. Yeah. Hi, Ashna. So I believe that where there's a will, there's always a way. You have to just work towards it and give your 100% and leave the result to your performance or
to the God, I think. Yeah. You have to just not worry about it and work on yourself. Yes. Tapeshwari, yeah. Hi. So same as Prachi said, you can't pour from an empty cup. It's very important to take care of yourself if you want to take care of others around you. And being married, there are a lot of people you have to take care of. So yeah. Yeah. And Richa, yeah. So I think most of the things have been already said, but I'd say just saying a little phrase to yourself on a daily basis, no matter what task you are into. So yes, I can do it, and I will do it and finish up the task on time is what I can keeps me motivated all the time. Maybe a smaller task, maybe a bigger task, or no matter what. Wonderful. Anyone else who's left Yeah, here? Tarunika. Ashna Tarunika with the camera off. And Prerna also. I think Prerna, Tarunika, yes. And Arunima. Okay. So first, let's start with Arunima. Hi, Ashna. I'm so sorry my video is not working. No, obviously. I think the most important thing for me is when people place their confidence in me when I represent them. So I feel that's something that makes me really happy. And yes, that's it. Yeah, wonderful, nice. Prerna. So for me, making the most of what you have instead of waiting for the perfect situation and the right moment. I think the right moment is now. When you decide to do something, it's there and then. And secondly, like it was mentioned earlier, gratitude plays a strong part, that you should be grateful for what you have in life instead of being fearful or worrying about things that you don't. So I think those are the two things. Wonderful. So one more person left, Also Tarunika and Mahima. Yeah, I think the video is off. Tarunika and Mahima, are you there listening to me? Yes. Yeah. Yeah, Ashna. Yeah, would you like to share some motivational sentence or a word about you? Definitely, Ashna, of course. So I'm a Reiki Grandmaster. I feel that doing Reiki every day and jotting down some points at the end of the day as an affirmations is what inspires me for the next day. Perfect. And Mahima. Hi, so helping others really makes me happy, and starting a day with a good dose of gratitude makes me really happy. Wonderful. It was actually so nice hearing from all of you. So I hope you're enjoying this little activity. So now this was spontaneous, okay? You were very clear. Clarity has power, and you guys were already clear. But let me just guess one thing that just happened with you all. As soon as I said, let's do something spontaneous, I'll give you 10 seconds. You have to say a motivational line or a sentence. Your brain started rushing. Mujhe kya bolna hai? Main ye bolungi, ye bolungi. Was it that? Was it that? I guessed it right. ऐसा होता है. We do not live in the present. मैंने सेंटेंस कंप्लीट किया और आपका दिमाग रश होने लग गया. You started just spinning कि मुझे ये बोलना है, अब मैं ये बोलूंगी, उसने ये बोल दिया, oh shit, मैंने ये सोचा था, उसने तो ये बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं, right? This happened, right? This happens every time because we want to become the best in front of the audience. ऐसा होता है. Understand the process अच्छे से, okay? ऐसा हुआ, जैसे मैंने बोला, आपका दिमाग स्पिन करने लग गया. आपने सोचा ठीक है, मुझे ये बोलना है, मुझे तो मिल गया, मुझे क्या बोलना है. बट सपोज यामिनी थॉट कि मुझे ये बोलना है, तापेश्वरी ने बोल दिया ऑलरेडी. यामिनी ने बोला ओ शिट, मुझे ये बोलना था, अब मुझे कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा. You are not living in the present. You are just running behind कि मुझे सबसे perfect और सबसे best answer देना है. You are running behind impressing people. You're running behind लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने गलत दे दिया, या लोग क्या बोलेंगे अगर मैं आंसर नहीं कर पाई. शिट, मेरी तो यहाँ पे हंसी उड़ जाएगी, अभी नहीं तो बाद में बोलेंगे अरे यार वो कंटेस्टेंट ने तो अच्छा आंसर ही नहीं दिया. राइट? ये हमारे दिमाग में होता है. We want to look the prettiest, we want to look the most presentable we want. And yeah, anybody?
No, it was just taking a note. एंड हम सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीव्स में अभी भी घिरे हुए हैं. सेल्फ डाउट है कि मैं अच्छा बोल पाऊंगी या नहीं, ये राइट आंसर था या नहीं, डिड आशना लाइक माय आंसर और नो, ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसा होता है या नहीं, दिमाग में चलता है या नहीं. So stop this habit right away. Stop impressing people. Do not think what the world will say. Each individual has their own personal calling and it's like a fingerprint. आप सबकी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए. There is no machine in the world जो फिंगरप्रिंट मैच कर सकती है आज तक. There is no machine in the world. So we have our own personal calling and it's unique like a fingerprint. So do not worry कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुझे impress कैसे करना है, मैं सबसे best कैसे रहूं. Be in the moment and just answer calmly whatever comes in your at that moment. You're getting my point? Clarity has a lot of power. And the second thing you have to do is apply ADE in your lifestyle. That is add, delete and edit. Don't worry, ये मैथ्स नहीं है, मैथ्स में मैं खुद बहुत कमजोर हूँ. We have एक हमारी पर्टिकुलर हैबिट होती है. फॉर एग्जाम्पल हम अलार्म लगा के सोते हैं. That's a habit. बहुत सारे लोग अलार्म लगा के सोते हैं. 80% लोग क्या करते हैं, जैसे अलार्म बजता है वी स्नूज और ये बोल के सो जाते हैं, यार सुबह हो गई, अब मुझे सोना है 5 मिनट और, स्नूज करो इसको. वो 2-3 बार स्नूज नहीं होता तब तक हमें नहीं उठता. या सोनल, आई थिंक यू आर द वन डूइंग दिस, राइट? यू आर द वन डूइंग दिस स्नूजिंग वाला थिंग. तो हम बहुत लोग करते हैं. हु डज दिस? आई एम द वन स्नूजिंग. आई एम स्टिल ट्राइंग टू ADE माय हैबिट. यस. और हम ये बोलकर सो जाते हैं बहुत बार, अरे यार 5 मिनट और इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है. वी से दैट, राइट? सो वी हैव टू ऐड, डिलीट सम ऑफ अ हैबिट. ऐसे चेन्स ऑफ हैबिट होते हैं हमारी लाइफ में जो इंटरलॉक्ड होते हैं. जैसे हमें मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा दिखता है तो हम हाथ जोड़ते हैं. दैट्स इंटरलॉक. बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग होती है कि मंदिर देखो तो जल्दी से बस हाथ जोड़ो. हम सुबह उठते हैं, चेन ऑफ हैबिट्स होती है हमारी. ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं. चेन ऑफ हैबिट इंटरलॉक्ड. बाय डिफॉल्ट हम वैसे चलते जाते हैं उस हैबिट में. वी हैव टू ADE. बहुत बार ऐसा होता है, वी हैव टू ऐड समथिंग, डिलीट समथिंग एंड एडिट समथिंग. अब जैसे अलार्म लगाया, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट. अब उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, क्या डिलीट कर रहे हो, क्या एडिट कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ. जो आप स्नूज कर रहे हो उसको आप डिलीट कर दो कि फ्रॉम टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्नूज. आई एम जस्ट गिविंग यू दिस अलार्म एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे इंटरलॉक्ड हैबिट्स होते हैं. यू कैन अप्लाई ADE wherever you want. तो आप स्नूज करने को डिलीट कर दो, बिल्कुल डिलीट कर दो. और व्हाट टू ऐड, व्हेन यू डिलीट यू हैव टू ऐड समथिंग. स्टार्ट एडिंग एफर्मेशन वर्ड्स कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ, आई एम अगेन लाइव हियर. इस दुनिया में बहुत सारे लोग रात में कुछ हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई किसी का डेथ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है. यू आर दैट वन इंडिविजुअल. फिर से मौका मिला है दूसरा दिन देखने का. सो यू आर समवेयर एडिंग एंड डिलीटिंग. स्नूज करने वाले हैबिट को आपने डिलीट कर दिया. एफर्मेशन वर्ड्स आप उसमें ऐड कर रहे हो. एंड व्हाट यू आर एडिटिंग इज, आप पूरा अलार्म वाला हैबिट को आपने एडिट कर दिया. जो आपका अलार्म का साइकिल था, बजता है, स्नूज करता है, छोड़ देते हैं, वापस स्नूज हो जाता है, वापस हम उसको वापस, ठीक है एक बार और स्नूज, ऐसे करके हम सो जाते हैं. सो वी आर एडिटिंग द होल साइकिल. सो वी हैव ऐड, डिलीट एंड एडिट समथिंग देयर. वैसे ही हम खाते हैं कुछ, पानी पीने की आदत है हमें, डेजर्ट खाने की आदत है, वी कैन ऐड, डिलीट देयर. अगर हम पूरा ग्लास पानी पी रहे हैं तो वी कैन जस्ट सिप, वी कैन एडिट दैट हैबिट. वी कैन डिलीट दैट हैबिट कि पानी नहीं पीना खाने के साथ या डेजर्ट नहीं खाना खाने के बाद. सो दे आर लॉट chain of habits we have to add, delete and edit to become a confident person altogether, because we act on a charisma. You know what's charisma? Acting on a default mode. हम अपने default mode में इतना act करते हैं, कभी कभी हम reaction देने से पहले हम सोचते ही नहीं है कि अरे ये reaction देना ही नहीं था, but by default ये reaction निकल गए. So once you start working beyond your charisma is you start becoming confident from inside. Are you all getting my point? कुछ serious बातें तो नहीं हो रही ना? Are you all enjoying? I'll take a pause. If any queries here, you can ask before moving further. Any queries here about till यहाँ तक हमने जो किया है, कुछ अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो मुझे. Anyone? No one. Okay. So we have to live in the present. I told you we have to balance our life. बहुत बार होता है कि balance नहीं होता है.
ठीक है, इट्स ओके, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैलेंस नहीं हो पाता, बट वी हैव टू बी इन द हार्मनी. What is harmony exactly? I think all of you know. And harmony is exactly like an orchestra. आप orchestra में देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट बजती है, वो एक साथ नहीं बजती, एक एक करके बजती है. एंड जब भी वो एक एक करके बजती है, द म्यूजिक इज सूदिंग एंड इट्स सो नाइस. ऐसा होता है या नहीं? ऑर्केस्ट्रा में सब इंस्ट्रूमेंट तो एक साथ नहीं बजते ना, वन बाय वन बजते हैं, चाहे वो नैनो सेकेंड्स के गैप में हो, बट जब साथ बजते हैं सब, it's so soothing to our ears. Exactly, our life is like an orchestra. We women have so many roles to play. Yeah, we women are by default all-rounders. I say it loud and clear, we women are by default all-rounders. हम तो बहुत कुछ एक साथ संभालने की हमें आदत है, वो है आदत, हमें शायद वो भगवान ने हमें इनबिल्ट करके भेजा है कि बस औरतों में ही आदत होनी चाहिए, होता है ऐसा. Our life is like orchestra. बहुत सारे roles हमें play करना पड़ता है. Daughter-in-law, daughter, wife, mother, किसी की चाची, किसी की मामी, ऑफिस में या तो हम बॉस के नीचे होते हैं या हम बॉस होते हैं, whatever, बहुत सारे roles होते हैं. If we start giving the best in each role, one at a time, just see how your life will become. You'll become a confident woman altogether. और अगर आप ये बोलोगे, ओ गॉड, आई एम अ गुड बॉस बट आई एम नॉट अ गुड मदर, यार मैं संभाल नहीं पा रही अपने बच्चे को, अगर ऐसा हुआ तो आर यू कॉन्फिडेंट समवेयर? आप औरों के सामने तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, लेकिन अंदर आपको पता है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं बॉस तो हूँ बहुत अच्छी, लेकिन आई एम नॉट अ गुड मॉम, या आई एम गुड मॉम बट यार आई एम नॉट अ गुड वाइफ, अब मैं क्या करूँ? ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, कोई एक रोल में हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने आप को. डू नॉट डू दैट. योर लाइफ इज लाइक ऑर्केस्ट्रा. ईच रोल, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप खाना भी बना रहे हो, दैट्स अ रोल इन योर लाइफ. आप बच्चों को संभाल रहे हो, डायपर भी चेंज कर रहे हो, तो दैट्स रोल इन योर लाइफ. डू इट, गिव योर 100% टू ईच रोल. ट्रस्ट मी, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड. यू जस्ट डोंट हैव टू बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम आउटसाइड कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ. ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत लोग हमें बोलते हैं कि वाओ, मेरे साथ ऐसा होता था, आशना यू आर टॉकिंग गुड, यार यू आर मेकिंग सेंस. मुझे लगता था वो आई एम द कॉन्फिडेंट वन. फिर कोई ऑब्स्टैकल आती थी मेरे साथ, तो मैं पीछे हो जाती थी कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी. क्या वो कॉन्फिडेंट है? औरों के सामने तो मैं घूम रही हूँ कि आई एम सो कॉन्फिडेंट, लेकिन सच में कुछ ऑब्स्टैकल अगर मुझे फेस करना पड़े तो एम आई कॉन्फिडेंट? नो. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट सेल्फ assured. You have to be self assured. You have to approve yourself. You have to take decision for yourself. There are many people who will give you advice. आपको बोलेंगे ये करो, ये सही है, ये नहीं है. It's okay. एक प्लेटर है, सपोज हम एक प्लेटर ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में जाके, सो दे हैव असॉर्टेड कबाब्स होते हैं उसमें, मशरूम्स, आलू. जरूरी नहीं ना हमें सब खाना है, जो हमें पसंद है हम वही खाएंगे ना. मुझे आलू पसंद नहीं है तो भाई मैं आलू कैसे खा लूं, मुझे तो मशरूम ही पसंद है. एग्जैक्टली विथ एडवाइस, फीडबैक, सजेशन एंड डिसीजन पीपल गिव यू. प्लेटर में आप सबका ले लो, इट्स ओके. फ्री में मिल रही है, क्या जा रहा है, फ्री में तो सब कुछ अच्छी लगती है, ले लो. सेट इट इन योर प्लेटर. सोक इन. सोक क्या करना है वो आपकी चॉइस है. सोक इन व्हाट यू लाइक, व्हाट यू थिंक कि हाँ मेरे लाइफ में ये एडवाइस या ये फीडबैक काम आने वाली है. टेक दैट. हम क्या करते हैं, कोई हमें बोल दे ओह ब्लंडर यार, यू आर नॉट स्पीकिंग गुड ऑल्सो, उसके पीछे हम रिवॉल्व करते रहते हैं कि लोग मेरे को ये बोल रहे हैं, आई थिंक मैं बोलने में अच्छी नहीं हूँ, वगैरह वगैरह. टेक थॉट्स एज क्लोथ्स. स्टार्ट ट्रीटिंग थॉट्स एज योर क्लोथ्स. अगर आपके वार्डरोब में आपको क्लोथ्स फिट नहीं आती तो आप क्या करते हो? यू डिस्कार्ड इट. जबरदस्ती पहनने की तो कोशिश नहीं करते ना आप, यू डिस्कार्ड इट. सेम विथ योर थॉट. जो थॉट आपको आपके माइंड के क्लोजेट में सर्व ही नहीं कर रही, तो वो नेगेटिव थॉट दिमाग में रख के क्या फायदा यार. स्प्रिंग क्लीन करो. आप अपना वार्डरोब तो हर दूसरे दिन स्प्रिंग क्लीन करते हो, दिमाग क्यों नहीं स्प्रिंग क्लीन करते? इंटीरियर डिजाइन आप बुलाते हो कि भाई मेरा किचन आप गुड इंटीरियर कर दो, बेडरूम, ऑफिस, पूजा घर, इंटीरियर. बट डू यू नो यू आर अ इंटीरियर डिजाइनर ऑफ योर माइंड. ऐसा कोई इंटीरियर डिजाइनर पैदा ही नहीं हुआ है कि आपके दिमाग को डिजाइन कर पाए. We are the interior designer of our mind. And when will that happen is when you are self-assured of everything. Does that make sense? Everyone, please give a thumbs up if yes. Now coming to one more point. Be confident. Don't pretend to be confident.
बहुत बार ऐसा होता है वी प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट. हम मीटिंग्स में जाते हैं, कोई हम जैसे फेमिना ले लो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, यू प्रिटेंड टू बी सो कॉन्फिडेंट. But be confident, don't pretend to be confident. It is basic, but it is very deep. This will happen if you go for a meeting. Okay, you heard me right. This will happen. You will be confident inside out if you go for a meeting. अब मीटिंग किसके साथ जाना है? क्लाइंट के साथ, बॉस के साथ, हस्बैंड के साथ, पड़ोसी के साथ, किसके साथ मीटिंग जाना है, वो पॉइंट है. What is meeting? It's me time. हम भूल ही जाते हैं. किसी ने सोचा है कि मीटिंग इज मी टाइम? किसी ने सोचा था आज तक? नहीं सोचा, राइट? वी रन बिहाइंड द मीटिंग. अरे आज मेरी जूम मीटिंग है, आशना आ रही है कॉन्फिडेंस के बारे में बताने के लिए, आई हैव टू जस्ट लॉग इन. वी रन बिहाइंड द मीटिंग. ओ आई एम गेटिंग लेट, आज बच्चों के स्कूल में पीटीएम है, वी हैव टू रन, मीटिंग है. मीटिंग मीटिंग मीटिंग, वी रन बिहाइंड मीटिंग. बट हैव यू थॉट मीटिंग इज मी टाइम? Me time is very important. Have meeting with yourself once in a while. Sit down with cup of coffee, tea, green tea, जो भी है, चाय, bowl of Maggi के साथ भी आप बैठ सकते हो. Sit down in a cool place, balcony में, bedroom में, कहीं पे भी जहां आपको अच्छा लगे. Sit down alone. Have meeting with yourself. अपने आप को क्वेश्चन पूछिए, वो अपने आप आंसर करोगे. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कॉफी के लिए जाते हैं, बट जब हम अपने साथ मीटिंग करते हैं, यू रियलाइज अरे मुझे कॉफी तो पसंद ही नहीं, मुझे तो चाय पसंद है. लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ ठीक है यार कॉफी ले आओ. ऐसा होता है या नहीं? वी एक्चुअली डोंट नो कितनी बार हमें क्या पसंद है. हम दुनिया की भाग दौड़ में इतना भाग रहे होते हैं, वी फॉरगेट कि व्हाट वी लाइक एंड व्हाट वी डिसलाइक. ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमें अपने बारे में नहीं पता, वो कोई और नहीं बता सकता है. यू आर यू विथ योर सेल्फ सिंस बर्थ. हम ऐसा बोलते हैं कि माई हस्बैंड नो द बेस्ट अबाउट मी, मेरी मम्मी मुझे सबसे अच्छा जानती है, या फलाना मुझे सबसे अच्छा जानता है. ऐसा होता है? नो, यू नो योर सेल्फ the best because you are with you 24/7, 365 days. You are just revolving around the sun and the moon and the solar system with yourself. कहीं ना कहीं आधे रास्ते तक आपके हस्बैंड साथ दे देंगे, आपके बच्चे साथ दे देंगे, पेरेंट्स साथ दे देंगे, लेकिन जो आधे रास्ते बच गए उसका क्या? खुद के साथ ही चलना है ना. You have to walk your journey of life. So have meeting with yourself once in a while. चाहे 5 मिनट के लिए दिन में आप अपने साथ मीटिंग नहीं कर सकते? आप फोन पे तो 1 घंटा आप लगे रहते हो. हाँ मम्मी ऐसे बनाई, मैंने ये किया वो किया. फ्रेंड के साथ, अरे यार वे आर वी गोइंग फॉर डिनर टुनाइट, व्हिच मूवी, अच्छा ये मूवी में यू सॉ करीना इज वेयरिंग दैट. ऐसा करते हैं ना. वी हैव सो मच गॉसिप्स एंड मीटिंग. खुद के साथ आप सोचिए आपके पास कितनी गॉसिप है अपने लिए. You know that you have that. So have that meeting with yourself. Now do you understand the importance of meeting now? Do you understand the importance of meeting? Yes. So any one of you who knew what meeting is? किसी को पता था ये मीटिंग क्या होता है? Surbi wants to say something. I know it because I've actually seen myself thinking away from life and then coming back. So I started valuing life and I thought that, yes, nobody can tell me who I am because nobody knows me better than I do. Correct. And I totally agree with what you said. But yeah, what you're saying is actually something that maybe all of us here know. But the way you put it, the clarity that we are getting through your words is phenomenal. Thank you so much. I'm so glad I'm able to, spread positivity. It's not that I want to become the best life coach or the best motivational speaker. It's that चाहे मैं 10 लोगों को कुछ बताऊं, तो वो मुझसे अगर थोड़ा सा भी ले पाए, तो that's serving humanity. And I'm here to serve humanity because I don't want one more Ashna going to anxiety or depression as I was in. मैं अपने साथ मीटिंग नहीं किया मैंने. I was, in my comfort zone, in a cocoon. तो मेरे साथ ऐसा हो गया. Once I came out of that, believe me, the universe is open to me today. The second thing I want to say after the meeting is come out of your comfort zone. हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो सब कुछ हम कर पाते हैं. वी आर कॉन्फिडेंट. वाओ, ये तो हमारी चुटकी का काम है, बाएं हाथ का खेल है, हम तो करके दिखा देंगे. उसमें तो कॉन्फिडेंट है ही हम. Come out of your comfort zone and then know what exactly is happening.
you'll come to know comfort zone से बाहर निकलोगे, then you'll see बहुत सारे areas, steps है life में जो आपने cover ही नहीं किया. When you start completing that one by one, step by step, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब कुछ एक साथ कर लो, comfort zone के बाहर निकल लो, सब कुछ कर लो. Do it one by one, small steps. Small steps, big priorities is the thing. Take small steps, come out of your comfort zone, and then see आप comfort zone से बाहर निकलने लगोगे, spontaneous होते रहोगे आप. Become spontaneous. Try something spontaneous once in a while. तब जब होगा ना कि आपको 10 seconds में ये बोलना है, तब आपकी mind spin नहीं करेगी. You'll be calm. Okay, मेरा turn आएगा तो जो उस टाइम दिमाग में आएगा मैं बोल दूंगी या बोल दूंगा. ऐसे होगा. Just be in the present moment. Come out of your comfort zone once in a while. Try new things, and then believe me, you'll capture the world. So 2 formulas I said. Last formula, third, is capture calmness in your lifestyle. Calmness is very, very important in a lifestyle. अब वो कैसे आती है? You have to meditate. अब मैं मेडिटेशन ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मॉन्क बन जाओ या पहाड़ों में जाके 1 घंटे बैठो या बहुत दूर जाओ और मेडिटेट करो. नो, मेडिटेशन इज वेरी वेरी इजी. आई स्वेयर इट्स इजियर देन द मेकअप, इट्स इजियर देन द टचअप. इतना इजी है मेडिटेटिंग. आई विल टेल यू द 3x3 फॉर्मूला. 3 मिनट के लिए 3 बार अपने साथ. डू यू गेट दैट? 3 मिनट के लिए दिन में 3 बार अपने साथ टाइम स्पेंड करो. इट्स ओके, आप कुछ भी करो. आप यूटेंसिल्स भी वॉश कर सकते हो, झाड़ू भी लगा सकते हो, डांस भी कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो, व्हाटएवर. बी विथ योरसेल्फ टोटली फॉर 3 minutes 3 times a day. Are you all doing this? I think you're not doing. आप मेकअप भी कर रहे हो तो दिमाग के पीछे कुछ और चल रहा है. जैसे आज हम सब ने मेकअप वेयर किया है, करेक्ट? I'll be very honest and very honest in my conversation. आज सब ने कुछ ना कुछ टचअप मेकअप किया है. जब हम मेकअप भी कर रहे थे, कुछ दिमाग में चल रहा था कि आज ये होने वाला है, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं अच्छी दिख रही हूं नहीं, वगैरह वगैरह. बहुत कुछ दिमाग में स्पिन हो रहा था. Avoid that. Be with yourself for 3 minutes. कि हाँ, अपने आप को बोलो, सपोज लाइक किसका नाम लूं मैं? प्राची अपने आप को बोलो कि व्हाट डू यू लाइक, क्या कर रहे हो, वेयर डू यू वांट टू इम्प्रूव, कहाँ कहाँ जाना है, व्हाट डू यू लाइक, आज शॉपिंग चले क्या? आस्क योरसेल्फ. हम क्या अपने आप को पूछते हैं कि हमें क्या पसंद है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ने पूछा है कि आज शॉपिंग चले क्या? नहीं ना. हम चाहते कोई और हमसे पूछे आज शॉपिंग चले, या हम किसी और को पूछते हैं, या हस्बैंड को पूछते हैं, बेबी आज शॉपिंग चले. ऐसा होता है ना? ऐसा होता है. हम अपने आप से क्या पूछते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है. We expect things. I'll tell you, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, I should be understood, I should be powerful, I should be rich, I should be the prettiest. ऐसा होता है ना? I should get this job, I should be promoted. I. We are so much I-centered. The most selfish word is I. That's why ice cream is so selfish. हर कोई आइसक्रीम के पीछे लगा रहता है because ice cream is selfish. I for ice cream. The I word is I alphabet is very, very selfish. Imagine everyone I-centered. तो आप दूसरों से expect क्यों कर रहे हो कुछ चीज? वो भी तो I-centered होंगे ना. आप I-centered हो तो वो दूसरा भी तो I-centered ही है. तो why do you expect? And you know you are I-centered, that person is I-centered. फिर भी expectations जब meet नहीं होती, we say अरे यार I expected this from you. शादी के बाद तो तुमने किया ही नहीं है. ऐसा होता है ना? We tell that. I expected this from you. यहाँ पे लाके तो तुमने और ही कुछ दिखा दिया मुझे. Why? You are I-centered, other one is I-centered. So why do you get hurt? Start giving more than expecting. Start thankfulness and gratitude. This is the best thing to go out of I. Do not become I-centered if you want to be happy in your life. You are responsible for your happiness. No one is else responsible for happiness. किसी ने गारंटी क्यों ली है आपको खुश करने के लिए? जो आप बोलते हो कि you took my guarantee, क्या उसकी रजामंदी से इस दुनिया में आए थे आप? No, आप तो खुद आए थे. तो you are solely responsible for your happiness. आप जैसा अंदर रखोगे वैसा ही आप बाहर दे पाओगे. Suppose you tell me, Ashna, I need 100 rupees. मेरे पॉकेट में 100 rupees है ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से दे दूंगी? I cannot give you. सेल्फ लव वही होता है. आपके अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है तो आप दूसरों के प्यार कैसे दे पाओगे? You cannot give. Whatever you have to give, you want to give,
That should be inside you. You get my point? Does that make sense? सेल्फ लव नहीं होगा, ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप दोगे कहाँ से? सेल्फ टॉक जो बोलते हैं ना, जैसा हम अपने साथ बातें करते हैं वैसा ही कहीं ना कहीं हमारी अंदर हम जो बातें करते हैं वो बाहर जाके निकलती है. Your thoughts become your words become your action, and your action portrays your outcome. This is the process जो हमेशा हम सुनते हैं, and this is reality. ये जो आज हमारी जो सेमिनार व्हाटएवर वी कॉल इट वेबिनार, ये रियलिटी चेक है. दिस इज अ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस इनसाइड आउट बनाएगी, बट दिस इज अ ब्लंट रियलिटी चेक फॉर ईच वन ऑफ अस. व्हाटएवर आई टोल्ड इज बेसिक. मैंने कोई बहुत कुछ महान चीज नहीं बोला. एवरीथिंग आई टोल्ड यू इज बेसिक, बट बिलीव मी, एवरी वन ऑफ अस आर मिसिंग आउट द बेसिक. आंट वी मिसिंग आउट द बेसिक? हमने सोचा ही नहीं ये मीटिंग के बारे में, ये कोच मेथड के बारे में, ये टाइम के बारे में, वरी के बारे में कभी सोचा ही नहीं. एंड बिलीव मी, एक बार आप आई सेंटर्ड होना छोड़ दोगे, यू विल बिकम हैप्पी ऑटोमेटिकली. छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, किस कोई आई एम इन गुवाहाटी, समवन फ्रॉम दिल्ली, आई स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई स्टेड अ लॉट इन दिल्ली. सो मुझे सोशल्स जाना, जनपद में शॉपिंग करना बहुत पसंद है. सो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन दिल्ली फ्यू डेज अगो. ही सेंड मी वन ड्रिंक का पिक्चर. उसमें लिखा हुआ था सम पटियाला, बनारसी पटियाला और समथिंग लिखा था. I saw that drink and I was like, wow. My husband like, are you crazy? ये फोटो है, फोटो पीने को नहीं मिल रहा तुम्हें, फोटो देख के क्यों खुश हो रही हो? Believe me, I put that in my Instagram story. What a virtual drink I received. Wow. So that is happiness. छोटी छोटी चीजों में happiness होती है. हमें देखना पड़ता है कि कहाँ ये खुशी है. We are always running behind things we don't have. We just miss out things we already have. We have a lot of things with us. You people are like in Mrs Femina. आज आप Mrs Femina नहीं जीत पाओगे, आप निराश हो जाओगे कि shit, I did not win the crown. But आप ये भूल रहे हो, you made in top 20. करोड़ों लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं इधर. You made in top 20. What more? To celebrate little wins in life. छोटी छोटी खुशियां अगर आप सेलिब्रेट करना शुरू कर दोगे. आई एम नॉट टेलिंग गो एंड सेलिब्रेट इन अ रेस्टोरेंट और फ्रेंड्स को पार्टी दो. I was featured in Forbes. I locked the room, danced like my heart out, and people were thinking I'm crazy. My daughter is like, Mama, ये कौन सा पार्टी हो रहा है? I celebrated with myself. That was the happiness I got for me. I celebrated. दुनिया चलो congratulate करेंगे, very good. People will tap your back. It's okay. But the first thing you have to do is trust yourself. Tap your bag. Say yourself, well done. I made it, yeah. I have to do more. This little win is actually what is needed and we miss out. Does that make sense? Any queries, any questions? Okay, so let's wind up quickly with one last tip. Start journaling. And start using affirmation sentences in the present tense. What that means is, affirmation words होते हैं, I am powerful, I can do that, but yes, I'll need advice. I can do this, it's a beautiful day. ये सब affirmation words होते हैं जो हम self talk करते हैं. हम negative self talk करते हैं, या मैं नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा, अगर मैं चली गई और मैं fail हो गई तो क्या होगा, अगर ये इतना हो गया बीच में अटक गई तो क्या होगा. All this comes in our mind. सेल्फ टॉक जो हम करेंगे, स्टार्ट यूजिंग अफर्मेशंस एंड स्टॉप बीइंग आई सेंटर्ड. जर्नल करिए, ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस में बिलीव करिए. एक्सचेंज 4 ग्रैटिट्यूड ईच डे विथ योर हस्बैंड. मेक अ ग्रैटिट्यूड जार. मे बी आप इन लॉज को बोल रहे हो या कुछ भी छोटी छोटी चीजें, मे बी अपने कुक को बोल रहे हो, स्टाफ को बोल रहे हो, किसी के साथ भी. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ग्रैटिट्यूड थिंग. यू विल बिकम अ पॉजिटिव इंडिविजुअल ऑल टुगेदर. आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी. एंड वन मोर थिंग बिफोर आई वाइंड अप एंड आई टेक क्वेश्चंस, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाहती हूँ. जो भी मैंने आज बोला, यहां से सुन के यहां से अगर निकाल दिया, nothing is going to work. You have to apply that in your life, then you'll see the change. And the best is yet to come. Do not quit no matter what. I'll take questions now. First, I just want to ask everybody, did you all like the session? Be honest. Nahi to nahi, it's okay.
Yes, you all enjoyed? बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया ना? Okay, so you can ask questions. You can unmute and throw up any questions you want to. Ashna, let's take about 3 questions because we've run very much out of time. And then I'm going to offer them your Instagram handle and they will DM you, which is what we've been doing. So let's just quickly take questions and... Yeah. Who raised a hand? Prerna? I think Prerna, yeah. So, Ashna, I actually wanted to ask you that we say that do what makes you happy. Nobody else is responsible for your own happiness. But at the same time, we also say don't be I-centered. But then since we are responsible for our own happiness, we have to do things that make us happy. That actually includes I'm thinking about myself and doing things. So how does that, both the things are very contradictory, and how do we actually incorporate those? See, I'll tell you, yes, I told you not to become I-centered. I'll still tell you don't become I-centered, and you are solely responsible for your happiness, right? हम I-centered होते हैं. When we be I-centered, we expect from others. I should be powerful. उसने ऐसा किया तो मैं powerful होऊंगा. I should be loved. I should be loved क्या होता है कि हम सामने वाले को जता रहे हैं कि you should love me. I deserve the love. I should be understood. हम सामने वाले को बता रहे हैं कि यार मैं I deserve to be understood. Why are you not understanding? But we forget self love. हमें खुद को प्यार देना है. That is not being I-centered. That is meeting with yourself. हमें खुद को प्यार देना है. हमें खुद को समझना है. So that we give. हम दे पाए. दूसरे मांगे या नहीं मांगे without expectations हम दे रहे हैं. That's becoming सेल्फ लव वाला थिंग आई सेंटर्ड वाला थिंग दोनों को अलग कर देता है, बिट कर देता है. ब्रेक इट डाउन एंड देन अंडरस्टैंड. हम खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं. हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी से भी. खुद से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, कोई बात नहीं, हो रहा है या पूरा नहीं हो रहा है, दैट्स अप टू अस. हम अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे. बट हम दूसरों से, अगर हम आई सेंटर्ड होते हैं तो आई शुड बी पावरफुल, आई शुड बी प्रमोटेड इन माई जॉब, आई शुड बी लव्ड. हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो दैट आई सेंटर्ड will destroy dreams, will break your heart, and you'll be hard on yourself. Be easy on yourself, and then you'll understand the difference. So basically I-centered is more in relation to the other person, not yourself. Yeah, so each individual is I-centered, each individual is I-centered. Still we expect from others. हमें पता होता है फिर भी हम expect करते हैं. तो do not expect. Give more. आप दो ना, आप love दो, आप कुछ भी दो. You're giving more, expect zero expectations. देखना आपकी अचानक अंदर से आपको खुशी मिलेगी when you're not expecting anything in return. I hope I did justice to your question. Absolutely. Yeah. Thank you so much. So anyone else? Yeah, questions. Surabhi, yes. Actually, whatever you said is wonderful. And I also do a little bit of life coaching. But I have a question here. You know what? My journey to Femina. And I really don't know what the criteria must be. There must be something in me. That's why they definitely got me in. But even before Femina, I was doing a lot of work for the society, for the people of my city. So I was very, very noticed. And I suddenly started seeing that my own friends, they start. I think you're mute. You are mute. Hello? Yeah, now it's fine. Yeah, I can hear you. So you were telling something about your friends. You were telling something. I'll DM Instagram. I'll talk to you on Instagram. Okay, no problem. Anyone now else? I can hear you. Now I can hear you. Yeah. So suddenly I see that my own friends, they started cutting off from me. And, so when I got selected for Femina, and I told one of the club members that I'm a part of, that please announce it in the club group. So she says, please announce it on the unofficial group. I'm not going to announce it. Though even if a paper cutting comes in the newspaper of somebody, they put it in the official club group, and she didn't want to announce such a big thing.
So I don't know, I'm not judging her for what she did, but isn't it true that when you become successful or you do something good, you actually attract a lot of haters, though because you're positive, you're getting the positivity. But then there are haters, a lot of negative vibes that come to you. These people are dream stealers. हमारे ड्रीम स्टीलर्स घर पे भी होते हैं, घर के बाहर भी होते हैं. I'll tell you quickly ड्रीम स्टीलर्स क्या होते हैं. घर पे जो ड्रीम स्टीलर्स होते हैं वो आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके लव्ड वंस होते हैं. वो आउट ऑफ कंसर्न आपको रोक रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगी तो क्या पता यू विल नॉट बी एबल टू डू, प्लीज अगर तुम नहीं निभा पाए या वट एवर. ऐसा होता है ना हमारे साथ. आउट ऑफ कंसर्न वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं. सो दे आर वन ड्रीम स्टीलर्स हु लव यू. अदर ड्रीम स्टीलर्स वो बाहर होते हैं, वो आपको ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, बिकॉज वो ये देख रहे हैं कि कल तक तो हमारे ही बंच ऑफ गर्ल्स के आसपास घूम रही थी और आज वो अगले मुकाम तक पहुंच गई है. ओ गॉड, ऐसा होना नहीं चाहिए इसके साथ. नो, एंड देन दे विल स्टार्ट टेलिंग यू आर नॉट गुड इनफ, तुम अच्छा नहीं कर रही यार, और कंटेस्टेंट ज्यादा अच्छा कर रहे हैं. दे आर योर ड्रीम स्टीलर्स. दे आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, एंड इफ वी गिव देम द टिकट, वो टिकट जो होता है ना वो हमारे हाथ में होते हैं, हमारे हाथ में होता है. जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें टिकट मिलता है, वैसे हमारी लाइफ के टिकट हमारे हाथ में होते हैं. हम किसी को लीड दे देंगे अगर, तो वो हमें और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे. डोंट गिव देम द लीड, लीव इट, लेट देम गो. उनके साथ आप बुरा भी मत बनो, अच्छा भी नहीं बनो. अगर वो डिटॉक्स हो रहे हैं आपके लाइफ से, ठीक है, दे वर नेवर योर फ्रेंड्स, they were with you because आप बहुत पार्टी कर रहे थे या उनके साथ आप घुल मिल रहे थे, whatever, let them go. खुद डिटॉक्स हो गए तो nothing best. वो आपके लाइफ में इतने नेगेटिव है, डिटॉक्स हो गए, हमें कुछ, and that's called ghosting. Ghosting is so much in trend. अचानक कोई आपको व्हाट्सएप से निकाल देता है, फेसबुक से ब्लॉक कर देता है, इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर देता है. That's called ghosting. Ghosting is so much in trend. जो आपको ऊंचा चढ़ते हुए नहीं देख पाते, वो लोग होते हैं जो आपको घोस्ट कर देते हैं. एंड जो घर पे ड्रीम स्टीलर्स होते हैं, उनके साथ आप आर्ग्यूमेंट मत करो. डोंट मेक योर फैमिली एनवायरनमेंट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग. आप उनको बोलो, ठीक है मैं एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं होगा तो आप जो बोलोगे मैं करूंगी. जस्ट गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ, एंड व्हेन यू डू इट दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ. सेम हैपेंड विथ मी, सो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग थ्रू माई एक्सपीरियंस. सो हेटर्स आर योर बिगेस्ट फैन. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. अपना टाइम वो आपके बारे में सोचकर निकाल रहे हैं, उससे ज्यादा कोई कीमती चीज मिलेगी? कोहिनूर का हीरा भी उतना कीमती नहीं होता जितना टाइम होता है, राइट? सो हेटर्स आर योर बिगेस्ट फैन. Yeah. Ashna, I want to say thank you. That was really inspiring. I think all of us are going to bring the inspirational letters of the alphabet that you've given us into our lives. And thank you, such generous sharing of learnings and strategies to face each day, also from your own experience, which makes it so much more precious and relatable. So ladies, as I was telling you, more of this inspiration can be found by following Ashna at Life Coach Ashna on Instagram. And I'm sure you will find her also on the other social media platforms. Yeah, platforms. Same name, and Life Coach Ashna. And ladies, thank you now again for joining us today and for participating in the Mrs Femina online hunt. The Femina team will be sending you a small token of our appreciation for the time we have spent together so far. And of course, we're sending you all our good wishes and good thoughts for your voting rounds. My thanks again to our presenting sponsor, Bosch Home Appliances, our hair and makeup partner, Naturals, our Silk Assurance partner, Silkmark. Thank you again, Ashna, for this inspiring session today. Ladies, congratulations once again to all of you. We can't wait to see how your Mrs. Femina journey pans out. See all of you on the other side. Thank you, guys. Wonderful. Thank you so much. You all can DM me, get in touch with my team, get in touch with me so that, we can spread positivity. Let's make wisdom go viral together.